Now, please tell me whether I'm audible or not, whether my screen is properly shared, everything. Just give me this acknowledgement and I will start this. Yes, sir. Okay, everything is fine, right? Yes. Even the screen is visible and my audio is like, it's okay to everyone. Okay, Yes, sir. sure. Thank you so much for all this. So, we have started with this, the different kind of cloud services, that is being provided with the Salesforce. So, as a part, we have seen Salesforce offer you sales cloud service in the marketing. Now, this is the most essential ingredients of your Salesforce CRM. When we discuss about the Salesforce offer you, so many kinds of applications. Salesforce actually have so many different kinds of modules, and with every module, Salesforce tries to give you something. Now, as a part of CRM, we have discussed this. वैसे तो देखा जाए तो there are so many different kinds of applications, but out of that, the Salesforce Salesforce got its most popularity with the Salesforce CRM. And Salesforce offer you the biggest, the most biggest, and the most intensive, cloud-based CRM solutions. And Salesforce CRM is the number one cloud-based CRM from the previous past 10 consecutive years. That is what the very essential to know. And as a part of CRMs, Salesforce CRM, the full form of CRM is customer relationship management. As a part of Salesforce CRM, the most important, there are three clouds that are Sales Cloud, Service Cloud, and the Marketing Cloud. But that doesn't mean कि अभी जो हम पढ़ने वाले वो उसका हिस्सा नहीं. Yes, this is है. This all cloud that we are going to discuss, they are also the part of CRM. But then the most of the functionalities, the kind of most of the functionality that are covered inside the CRM, they comes from either Sales Cloud, Service Cloud, and the Marketing Cloud. And that is what we have discussed in the last lecture. Now let me start, continue with this topic. Let's start the further things. So Salesforce even offer you something called as App Cloud. App stands for Application Cloud. And I'm going to tell you two things regarding this. First of all, what is the App Cloud and what is the App Exchange? What is the App Cloud and what is the App Exchange? Let me first log in into one org so that I can, in the practical, I can show you what does actually, what the App Cloud is. And what exactly is the App Exchange? Let me try to first log in into any one of the. I'm having so many orgs because for every batch inside the training, for every batch inside the training, I used to create one org. What's the password? Let me take any another batch for this. I used to create one org for every batch, and so I have so many orgs. Let me try to log in into any one of them, and I can show you what exactly is the App Cloud and what exactly is the App Exchange. Okay. So first of all, let's come to the theory part. See, you must have learned all this. You have learned what exactly is the application of the Sales Cloud and the Service Cloud and the Marketing Cloud. Now let's start with the Marketing Cloud. App Cloud. See, whenever we develop any application inside the Salesforce, first of all, what kind of application we are developing? We are developing a cloud-based application because Salesforce is what? Salesforce is a cloud service provider. You know, what is Salesforce? Salesforce is a cloud-based service provider. And if you develop any application as a developer, you are going to become a Salesforce developer. You're going to become a Salesforce administrator. है ना? So as a part of your daily routine, you are going to be deployed on the projects. What you are going to develop inside the project, you are going to develop some sort of cloud-based CRM applications. So when you are developing something, when we are developing a customized application for any requirement, we are also going to start with this project. जब हम practice करेंगे, so I'm going to give you a practice related to one talent acquisition application. We as in practice, we are going to develop one project. What kind of project? It will be an HR management project. आपने सुना होगा ऐसा कोई project कि the people those who work for the kind of recruitment process जिसमें HRs होते हैं, जिसमें candidates होता है, जिसमें कुछ positions होती हैं, position that is generated for different kind of cities, उनको manage करते हुए different kinds of HR. The HR itself belongs to different cities, and then the candidate those who apply for different kind of positions. So we are going to develop one kind of project ताकि आपको वो सारी
जो जानकारी है दैट इज रिलेटेड टू अ रियल टाइम प्रोजेक्ट, यू आल्सो गोइंग टू गेट इट नो। तो उसमें क्या क्या लगता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ हाउ टू डेवलप द ऑब्जेक्ट्स, how to develop the relationship between the objects, then what kind of fields that are required inside the objects, ऐसा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक एडमिन प्रोजेक्ट से देने वाले हो। So as a part of Salesforce administrator, now let me tell you this. First of all, when we develop an application, when we develop a Salesforce based application, first of all, there are two things. There are two things. Let me tell you this. Whenever you develop an application, as an starting, as I have told you, कि this training, ये training जो आप कर रहे हो, उसका नाम है Salesforce Classic Training, first of all. इसके बाद में फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, आप चाहें तो लाइटनिंग पे जा सकते हैं, आप चाहें तो CPQs पे, पार्डॉट्स पे, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बिकॉज Salesforce itself have so many modules. But everyone who starts its journey, everyone who starts its journey in the Salesforce ecosystem, this is the very first training. This is the step number one. When you get inside the Salesforce ecosystem to learn what exactly is the Salesforce and how to get yourself introduced. This is the very first training. ये सबसे पहली ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में फिर चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आफ्टर दिस एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड। LWC lightning, that is something which is very specialized kind of training. CPQ is a specialized kind of training, Einstein, that is again a specialized। तो इसके बाद में जितना भी है ना, वो स्पेशलाइजेशन है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये जनरलाइजेशन है। विदाउट दिस यू कैन नॉट गो विद द स्पेशलाइजेशन, इवन यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। अगर कोई BBA नहीं करेगा तो वो MBA कैसा करेगा, है ना। अगर कोई BE नहीं करेगा तो वो MTech कैसा कर लेगा। सो दैट इज हाउ इट गोज के टू अंडरस्टैंड द other specialization parts, you must have to undergo with this kind of training. So जितने भी लोग जब भी Salesforce में आते हैं वो सबसे पहली ट्रेनिंग यही परफॉर्म करते हैं। So now as a part of this training, आप भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हो, it all depends के what kind of application you are developing, and based on the requirement of your application, ठीक है। based on the requirement of your application, कभी कभी तो ऐसा होता है कि the entire application development में पूरा पूरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। if we are developing some sort of light weighted CRM application, जिसकी की रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बहुत हैवी फंक्शनैलिटीज नहीं है, अगर बाय द वे, है ना। तो उस केसेस में तो सारा का सारा प्रोजेक्ट ही एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप कर लेता है। एंड इफ एडमिन इज डेवलपिंग समथिंग, लेट मी टेल यू दिस, वी डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ कोडिंग, we don't require to code any program, we don't require to know the coding knowledge, that we can skip that part। you also going to do this, I mean as an administrator you are going to develop one project, उसके बाद में हम उसमें और चीजें functionalities include करेंगे। हाँ, if you want to leverage some kind of functionality, if you want to if you want to have some specialized features, if you want to go beyond what can admin provide you, if you want to include that functionality also, then you should go with the development। तो लाइट वेटेड कुछ ऐसे भी CRM होते हैं जिसको पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेटर ही डेवलपर कर देता है। हाँ, फिर ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए फिर हमें डेवलपमेंट पे जाना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू आल्सो दिस, practically 60 to 70% of real time development, actually goes with the admin only। The very first buddy who actually works on the project is Salesforce administrator। एंड दैट इज वाई आई मस्ट टेल यू कि एडमिन की भी जॉब्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यस है, वी रिक्वायर फॉर 60 to 70% ऑफ द डेवलपमेंट, दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर हुड ओनली। once the admin has clear the thing, फिर उसके बाद में कुछ 30-40% ऑफ द प्रोजेक्ट रहता है जहाँ पे वी नीड टू हैव सम एडिशनल फंक्शनैलिटीज, एंड दैट इज बियॉन्ड द एडमिन कंट्रोल। उसके बाद उसको फिर नहीं आता, है ना। that cannot he cannot actually incorporate that kind of functionality, तब डेवलपर का रोल आता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं सेल्सफोर्स में तो आपको कोडिंग आना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा सिंपली कुछ भी नहीं है सच में। एंड फॉर द एंटायर एडमिन मॉड्यूल यू आल्सो गोइंग टू डेवलप एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे फीचर्स आप डालने वाले हो, and without coding that we are going to do everything without coding up to this 50 to 60 lectures, and up to coming this 1.5 to 2 month, we are not going to write any single line of code, still we are able to develop some smart Salesforce based cloud application, we are going to do this, so you just wait and watch।
कि आप देखो, आप अपनी आंख से विटनेस करो इस चीज को कि फॉर द नेक्स्ट कमिंग 45 to 50 लेक्चर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डेवलप द एप्लीकेशंस। आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, सेल्सफोर्स बेस्ड क्लाउड एप्लीकेशंस, a CRM based application you are going to develop, and you are not going to write a single line of code for all this. तो यही है सेल्सफोर्स का ब्यूटी, दैट इज व्हाट द सेल्सफोर्स पावर के एंटायर एडमिन मॉड्यूल, एंटायर एडमिन मॉड्यूल इज प्योरली एंड प्योरली नॉन कोडिंग एनवायरनमेंट। हाँ, so when you develop, when you develop something, now let me please come back to this topic. When you develop something, when you develop a Salesforce based cloud application, a Salesforce based CRM application, whatever, आप जिस किसी नाम से इसको बुलाना चाहें, whatever the name you want to tell, so you precisely require two things. One is the force.com platform, and second is database.com. One is the force.com platform, and the second is database.com. I'm going to tell you what exactly this is. Now, with the help of App Cloud, जैसे हमने डिस्कस किया था कि what are the applications of Sales Cloud, है ना, in the last lecture we have discussed this, हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि what are the applications of the Sales Cloud, what are the applications of the Service Cloud, and Service Cloud is quite big, it's big, it has so many features, and so I have explained all of this. I have explained you what's the knowledge base, what's this live agent communities, and what is CTI actually means. Service Cloud have so many features inside this. Service Cloud Salesforce का सबसे बड़ा है. And we have discussed this. We have even discussed how does the marketing cloud comes into the existence. There was a product called as Exact Target. And no, Salesforce has taken over this. And with the help of this, Exact Target, Salesforce, make some customizations and make it in the marketing cloud. This is how the app cloud comes into the picture. We have discussed all those things. Now, let me go ahead and discuss what does app cloud do. The kind of application of the app cloud is to provide you all those functionalities with which you can develop Salesforce-based custom applications. You're going to develop Salesforce-based custom application as a Salesforce developer, as a Salesforce administrator. What is your job? Your job is to build the custom application, the custom functionalities inside the Salesforce. So you definitely require two things. One is the force.com platform, and the second is database.com. So as a part of App Cloud, and as a part of App Cloud, not App Exchange is something different. I'm going to tell you that also. As a part of App Cloud, let me put up one hand over here. Remove the bracket. It actually creates some sort of ambiguity over there. Yeah, I'm going to explain you two things. What is the App Cloud and what is the App Exchange? Okay, we are going to discuss these two things because this could ask you. They could ask you this question inside the interview. What is an app exchange? What is the functionalities of an app exchange? So please write on this, although I'm going to share this interview questions with you. So from tomorrow, we are going to start with the concrete batch. Today itself, we have extended one more day for your demo. Probably it is going to end it on the last week, but as you know, I have not taken batch, so it's my mistake. So we have extended this one day just for demo also. Tomorrow onward, we are going to have this concrete batch, and then I'm going to share you all these notes, all this Salesforce, whatever I'm writing it over here. You are going to get this copy. You are going to get this copy of this notes. You are even going to get this copy of the Salesforce interview questions, all of the thing, whatever I used to provide in the training, you are going to get everything. ठीक है? वैसे मैं recorded video share कर ही रहा हूँ आप सभी से. Apart from this, you are going to get all this, but that is going to be happen tomorrow. So App Cloud mainly consists of two things. App Cloud mainly consists of two things. दो चीजें होती. What is that? Force.com platform and database.com platform. Now, where is the force.com platform used? Where is the database.com platform used? वो हम समझ रहे हैं. So if you are developing something, a cloud-based application, either by the admin module, or if you are developing something with the development part, and if you are doing some sort of Apex programming, जब आप development start करेंगे, तो what sort of programming you are going to learn? So you are going to learn the Apex programming. You are going to learn the Visual Force programming, something called as VF page programming, Visual Force page design करना. We usually develop the front end from the Visual Force, and we develop the back end from the Apex also. The codings which are runs inside the back end, that is from the Apex. So what is this? We are going to learn inside the development part. So whether if you are developing some application with the admin module, okay, if you're developing some with the admin, or maybe you're developing something with the development, you're developing something with the development.
चाहे आप एडमिन में हो, चाहे आप डेवलपमेंट में हो, ठीक है, डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स दैट डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स अपेक्स एंड द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग. तो what kind of platform you are using, you are getting all this because source with the help of force.com platform, Salesforce enables all these functionalities. Salesforce enable you all these functionality to develop anything with the help of force.com platform. And this we have already discussed. Let me try to go back to the second lecture when we were discussing, as I have told you, okay, there are three kinds of services, cloud services, SaaS, PaaS, and IaaS. हमने इस पर discussion किया था. And then one thing that I quote, and that time I quoted is that, there are so many cloud vendors. Out of them, Salesforce is the only cloud vendor who precisely provide you all three kinds of cloud services. Now, Salesforce provide you SaaS, PaaS, and IaaS. What does a SaaS? SaaS stands for software as a service. PaaS stands for platform as a service. And then IaaS stands for infrastructure as a service. तो मैंने फिर ये डिस्कस किया था. This, I think this was the second or third lecture. I don't exactly remember. But if you go in the past and watch the lectures, you are going to see this. I have discussed this with you guys. How exactly Salesforce provide you SaaS. Say SaaS is being provided by the CRM services. How exactly Salesforce exactly provides you the PaaS. What is SaaS? What is PaaS? What is IaaS? That is what we have already discussed. So as a part of PaaS, I have told you, whenever we try to develop something, whenever we try to construct one application, as a software engineer, what we require some sort of tools, like we require the compilers. If you are if you are a Java programmer, for example, if you develop some Java application, you for sure require something called a Java runtime environment. What is that? It's a collection of all those tools. Java runtime environment, you need to install that, but because that is one on-premise application. Java is one on-premise application. So if you develop something in the Java, you must install something called a Java runtime environment. It's a collection of all those tools which are required to develop a Java application. If you're trying to develop a .NET based application, you certainly require to install that .NET Microsoft .NET suite inside your computer. Oh, that is again a on-premise application. वो सारी चीजें on-premise है. And similarly, here is what, when you try to develop any cloud-based application, there also you require certain kinds of tools. You require the compilers, you require the runtime engines, runtime environments, but that are cloud-based. You don't need to install them. है ना, आपको install तो नहीं करना है, but you actually require to access them from the servers. उन्हें server से access करना है. How you are going to access that? You must require one platform for all this. And that is what, that is where the force.com platform comes into the picture. With the help of this platform, it's a Salesforce inbuilt platform. First of all, let me tell you, what is the force.com? It's a Salesforce built platform with which you can develop the cloud-based applications. See, that time also we have discussed. है ना, ये चीजें अभी दिख रही हैं मुझे. So मुझे याद आया कि yes, we have discussed that time also. How to develop an application? We can develop an application with the admin module. That is what a non-coding module. With the help of non-coding, you can also develop an application. With the help of coding, also you can develop the applications. ठीक है? और your application could be a combination of non-coding and coding, जैसे कि normally होता है. जैसे कि normally होता है. Usually the development always, application development, project development, it always starts with the admin end. Admin पे उसकी शुरुआत होती है. And the admin, initially the admin incorporate all kind of functionalities. उसके बाद फिर जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पे we go for the customizations. That means we go for the programming modules. We go for the Apex programming. We go for the Visual Force programming. We go for writing the triggers. All that thing. Whatever comes into the development. वो सारी चीजें बाद में आती है. But initially, 50 to 60% of every project is being developed by the admin only. That is why we cannot say like this कि भैया admin पे कम requirement है. ना ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत requirements है. Now it's up to you whether you want to whether you want to learn just this thing and then whether you want to complete this whole training. अब वो आपके ऊपर है. वो अलग बात है. वो आपका टेस्ट है. लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिन को कम, डेवलपमेंट को ज्यादा, पैकेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी कुछ नहीं है. सिंपली ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वो वैसे भी हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेटेड टू द force.com प्लेटफॉर्म. तो whenever we try to develop an application, we certainly require two things, ठीक है, and that is being provided by the app cloud. What is two things? The first is force.com platform, which is a combination of your admin and your development sort of things. Whatever you require,
whatever you require to develop an application is being provided by the force.com platform. And of this force.com platform, it is a feature of app cloud. It is the feature of app cloud. So if this means if I have, let me go to any object and let me try to expand this and let me try to show you something. So if I have this force.com platform with me, if I have this platform with me, if I have this platform, it means in this particular organization, I am having the facilities from the app cloud. This actually shows me that I am having these facilities from the app cloud. Okay. Now let's come to the second component of the force.com. It is something called as database.com. Database.com. Okay. आपने सुना होगा, अगर कोई थोड़ा बहुत एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जानता है, तो आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रंट एंड बैक एंड. Give me a second. Let me try to open one diagram. I think I have one diagram related to this. Just let me try to find out that diagram. I have something for this. Yes, I think I have this diagram. And with this diagram, I am going to discuss few more things also. इस डायग्राम के साथ कुछ चीजें और हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन what exactly is the database.com. Now see, usually whenever we try to develop an application, अगर आप में से कोई Java, .NET, Python या फिर ऐसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है जिसे, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं. एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इनिशियली ना दो चीजें आती है, योर फ्रंट एंड पार्ट, योर बैक एंड पार्ट. यूजुअली है ना, हमेशा ऐसी बात की जाती है, योर फ्रंट एंड पार्ट एंड योर बैक एंड पार्ट. What's the backend stands for? Backend stands for your database. Backend stands for the database. Your front end stands for the user interfaces, sometimes called as GUI. GUI stands for graphical user interface. अब usually कैसा होता था? In terms of .NET, I'm telling you this. In terms of Java, I'm telling you this. Then let me come back to this Salesforce. ठीक है, मैं Salesforce में बाद में आऊंगा. पहले इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो. दिस इज एसेंशियली वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आज ही इसका वक्त है डिस्कस करने का. Now, once you get into the Salesforce and you started, getting the details of the concept, तब ये सब बातें करना मेरे ख्याल से कोई फायदेमंद नहीं है. So आज ही मेरे ख्याल इसका सही वक्त है जब हम इन सब चीजों को डिस्कस कर सकें. देखिए, इन टर्म्स ऑफ जावा और .NET पहले मेरे को समझाने दो. मान के चलिए कि मैं .NET प्रोग्रामिंग है ना, आई एम अ .NET डेवलपर and I used to develop an applications that using the .NET programming. तो मैं सबसे पहले एक फॉर्म डिजाइन करूंगा इस तरह का. I usually develop this form. Now that form कैसे डिजाइन करूंगा? .NET have some drag and drop kind of functionalities. With this, I have एक ये मैंने कस्टमर आईडी के लिए एक बॉक्स बनाया, कस्टमर नेम एंटर करने के लिए, फोन, फैक्स, whatever. I have created one form. तो who is going to create this form? वो जो भी इसको बनाएगा is called as front end engineers. Is called as front end engineers or the front end programmers. तो उसका काम सिर्फ यहाँ तक सीमित होता है. We have, when we deal with this kind of technologies, like if we deal with the .NET and if we deal with the Java, so we usually seen this kind of post, the front end engineers, back end engineers, front end programmers. We have seen this. Back end programmers also we have seen this. So as a part of front end engineer, what he is going to develop, his responsibility is to develop one interesting one, a friendly graphical user interface. That is what his only responsibility. कि उसको एक form design करता है, and that form will try to collect the information from the users. Users need to enter something over here. User need to enter something over here, something over here. He's actually, or maybe ये customer ID जो है वो default आ सकता है database से, ऐसा भी हो सकता है. And user need to enter his name, user need to enter phone, user need to, or maybe the balance also comes from the database as a push, and then he can either press the save button, he can either press the cancel button, whatever. So this is what the job of a front end engineer. तो अब एक प्रोजेक्ट जो है वो कितने हिस्से में बट रहा है वो सुनिए. जब भी एक डेवलपमेंट आया तो सबसे पहले डेवलपमेंट किसके हाथ में? क्या डेवलपमेंट goes in the hands of front end engineer. Now front end engineers will decide and decide and develop
कि कितने इंटरफेसेस बना के हमको एक फ्रंट एंड क्रिएट करना है. वी नीड टू क्रिएट वन यूजर इंटरफेस एंड हाउ मेनी fields, these all are the fields, these all are the fields. How many fields we are going to interface inside this? This is the job of a front end engineer. अब जब फ्रंट एंड इंजीनियर जब अपना काम करके खत्म कर देता है, then comes the role of the people, those who are the programmers, ठीक है. अब इनका भी बाद में आता है, चलो इनके ऊपर भी बाद में आता है. एज एन स्टेप नंबर वन ऑफ द डेवलपमेंट, सबसे पहले जो टीम काम करती है वो फ्रंट एंड की टीम काम करती है. मैं बात कर रहा हूँ किस इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बात कर रहा हूँ जावा या डॉट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. सेल्स फोर्स में मैं बाद में आता हूँ, और मैं फिर काफी सारी चीजें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे रिलेटेड टू द सेल्स फोर्स. वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस एंटायर प्रोसेस, जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी प्रोसेस को हम सेल्स फोर्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं. And then we are going to conclude on few important points. कुछ चीजों पर हम कंक्लूजन करने वाले हैं. ये कल चल के अगर कोई डॉट नेट वाला आपसे टकरा जाए, कोई जावा वाला आपसे टकरा जाए, कोई ओरेकल है ना, कोई ये जो फ्रंट एंड इंजीनियर्स में जो जैसे कि नोड जेएस, या फिर आपकी जो भी दूसरी प्रोग्रामिंग वाले पाइथन वाले अगर आपसे कभी बातचीत में आए, तो आप बता सकते हैं कि सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट कैसे अलग है आपकी टेक्नोलॉजी से. तो वो डिस्कस करने के लिए कुछ मुद्दे वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर कोई डॉट नेट में फ्रंट एंड इंजीनियर आपसे मिले और कहे कि मैं फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ, तो सबसे पहले आप समझिए कि उसका काम क्या है. उसका काम है यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करना. और ये वो फॉर्म्स होते हैं जिसमें यूजुअली आपने भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म कहीं ना कहीं तो दिखने में मिल गए. समवन माइक इज ऑन, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो इसके बाद वंस द फॉर्म हैज बीन डिजाइन, दिस यूजर इंटरफेस हैज बीन डिजाइन, अब जो दूसरी टीम प्रोजेक्ट पे काम करती है ना, वो टीम होती है बैकएंड की टीम. बैकएंड की टीम प्रिसाइसली वो टीम होती है जो डेटाबेस की जानकारी रखती है. I mean, these people are normally, very good in the oracles, very good in the SQLs. ये वो लोग होते हैं जो इस यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स है, देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कस्टमर आईडी है, नेम है, फोन है, बैलेंस है ना. अभी तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, तो एक छोटा सा इंटरफेस क्रिएट किया आपको सिर्फ समझाने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू ऑल दोज फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन यूजर फॉर्म, दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस यूजर इंटरफेस, दे विल क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल क्रिएट वन डेटाबेस टेबल. एक डेटाबेस का टेबल क्रिएट करेंगे. उसके बाद में उसमें जितने भी कॉलम्स रहेंगे, द कॉलम नेम या द नंबर ऑफ द कॉलम्स विल सेम द नंबर ऑफ फील्ड्स. अगर वहां पे इफ यू हैव 4 फील्ड्स ओवर हियर, 1 2 3 4, दे विल क्रिएट दिस टेबल विद द 4 फील्ड्स, है ना. अब उसका नाम सेम रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं, वो एक अलग बात है, बिकॉज ये एक अलग साइड ऑफ डेवलपमेंट है, ये एक अलग साइड ऑफ डेवलपमेंट है. ठीक है. यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है डॉट नेट वाला, जावा वाला. यहाँ पे कौन काम कर रहा है? एसक्यूएल वाला, ओरेकल वाला. दीज आर डेटाबेस इंजीनियर्स जिनका कोर्स, जिन्होंने एसक्यूएल या ओरेकल पढ़ रखा है. ठीक है. दे आर गोइंग टू क्रिएट द बैक एंड फॉर दिस. और हर हर एप्लीकेशन में दो चीजें तो जरूर होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सिर्फ फ्रंट एंड बना के कोई फायदा नहीं. आप ये डेटा कहाँ से कहाँ पे स्टोर करेंगे? यू ऑलवेज रिक्वायर वन डेटाबेस फॉर दिस. यूजुअली एसक्यूएल्स होता है, यूजुअली पीएल एसक्यूएल्स होते हैं, या फिर ओरेकल्स होते हैं, जो ना जो बैकएंड में रहते हैं हमेशा. तो इस प्रोजेक्ट में एक दूसरी टीम इन्वॉल्व होती है. अब फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं, बैक एंड इंजीनियर्स हैं, दो टीम का हमको पता चल गया. तीसरी टीम होती है द पीपल ऑफ वेरी गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक टीम. नाउ दिस टीम, ये वो बंदे होते हैं जो एक्चुअली कनेक्टर क्लासेस लिखते हैं. ये वो क्लासेस लिखते हैं जिसके थ्रू हम इस यूजर इंटरफेस को कनेक्ट करते हैं डेटाबेस टेबल के साथ, and vice versa also. So these are the people who actually built up the classes that is used to establish the communication, one bidirectional communication between this user interface and the database. तो वरना ये दो सेपरेट एंटिटी बन के रह जाएगा, ये अलग एंटिटी हो जाएगा, ये अलग एंटिटी हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो कम्युनिकेशन. व्हाई दिस क्रिएटेड का कुछ पता नहीं चलेगा. एंड that is why to make this available, to make this user interface available to the database, and the database available to the user interface, to establish this bidirectional communication, there are few people, something called as business logic team, who actually write down all this lines of the codes, who actually built up the code, who actually built up the programming, जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट किए जाते हैं. So this is how the usually development has been done inside the .NET and the Java or C++ or any other programming language. इस तरह से काम चलता है जनरली.
ठीक है। अब इसमें दो चीजें जो नोटिस करने लायक है, सबसे पहली बात, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मैन पावर्स ज्यादा है। मे बी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपको कितने हायरिंग, कितने आपको फ्रंट एंड इंजीनियर्स, कितने बैक एंड इंजीनियर्स और कितने बिजनेस लॉजिक इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है। बट एटलीस्ट 3 टीम तो रिक्वायर्ड है मुझे, अगर कुछ नहीं, अगर तीन, अगर मैं कहूँ कि बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है तो एटलीस्ट 3 लोग तो भी लगेंगे मुझको। 3 अलग अलग लोग, फ्रंट एंड प्रोग्रामर, बैक एंड प्रोग्रामर एंड बिजनेस लॉजिक प्रोग्रामर। अगर मिनिमम बोलूं मैं, मिनिमम बस एक एक बंदा ही है मेरे को चाहिए, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। बट एटलीस्ट आई रिक्वायर थ्री थ्री पर्सन टू वर्क ऑन दिस, है ना, ये पहली बात। दूसरा, टाइम। टाइम कितना लग रहा है? सी, जब तक फ्रंट एंड वाला काम नहीं करेगा ना, तब तक बैक एंड वाला काम नहीं कर सकता। और जब तक इन दोनों का काम पूरा नहीं होता ना, तब तक बिजनेस लॉजिक क्लास नहीं लिखी जा सकती। यू नो, ये, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम ज्यादा है। इसका काम खत्म होने में लेट्स कंसिडर कि इसने 15 दिन लगा दिया। सो आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, डे वन से ये शुरू नहीं कर सकता। आफ्टर 15 डेज, व्हेन ही सबमिट दिस, कि ठीक है अभी मेरा काम हो गया, एंड आई हैव बिल्ट अप ऑल दोस फील्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, आई हैव बिल्ट अप ऑल दोस फील्ड्स, तो वो 15 दिन बाद, 16 दिन में, 16वें दिन में ये शुरू करेगा। नाउ ही मे रिक्वायर 5 more days, तो इसने 5 दिन और लगा दिए। सो मे बी द 20 days ऑफ द डेवलपमेंट हैज बीन completed। एंड वंस ही सेट कि ठीक है चलिए, मैंने आपके whatever the fields you have created, I have created one, database table, and it's having all those columns according to your fields, according to your business, according to your user interface. I have created one table with all the required fields. तो 20 दिन के डेवलपमेंट के बाद 21वें दिन ये बंदा शुरू करता है, ओके नाउ यू बोथ ऑफ यू हैव डन, गो एंड हैव योर कॉफी, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू राइट डाउन द बिजनेस लॉजिक क्लास। तो इसका काम कब शुरू होता है? वो 25वें दिन बाद। एंड देन ही आल्सो मे बी रिक्वायर्ड दैट, मे बी दैट 5 to 10 days। तो ऐसा डेवलपमेंट में स्टेजेस वाइज स्टेजेस चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में इसका काम कंप्लीट होगा, दूसरी स्टेज में इसका काम कंप्लीट होगा, इन दोनों के काम कंप्लीट होने के बाद इसका काम होगा, और सबसे आखिरी में टेस्टिंग परफॉर्म होगी। सो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, काफी वक्त लगने वाला है। ये सब कुछ चीजें हैं बेसिक, जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है ना। विद ऑल दिस वी हैव आइडेंटिफाई कितनी सारी डिफिकल्टीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है, कितनी सारी डिफिकल्टीज नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं सेल्स फोर्स के साथ। ठीक है, सेल्स फोर्स के साथ में कंपेयर करते हैं, तो सेल्स फोर्स का डेवलपमेंट इज समथिंग कॉल्ड एज रैपिड डेवलपमेंट। हाँ, एक छोटी सी बात मेरे से बतानी, अच्छा चलो सेल्स फोर्स में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आ जाऊंगा। सेल्स फोर्स का डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज समथिंग रैपिड डेवलपमेंट। सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट बहुत ईजी एंड बहुत जल्दी होता है। क्यों जल्दी होता है, क्यों ईजी होता है? ऐसा क्या है सेल्स फोर्स में जिसकी वजह से डेवलपमेंट इतना फास्ट होता है? सो लेट मी ट्राई टू डिस्कस दिस। देखिए, अब यही चीज आप सेल्सफोर्स में कैसे डेवलप करते हैं। लेट्स स्टक टू द एडमिन मॉड्यूल ओनली। मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि इनसाइड योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट you require admin, you may require development. But if you're developing a light-weighted application, the entire application can only and only be developed by the admin. Admin ही develop कर लेगा, पूरा पूरा develop कर लेगा. So let's consider that case, है ना। हम ऐसी कोई केस कंसीडर करते हैं जहां पर we are developing a light-weighted application, और फिर हमें जहां प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स की, है ना, जो आप सीखने वाले हो, आने वाले, मैंने कहा ना, आने वाले 2 महीना 1.5 महीना जो आप सीखने वाले हो वो यही है, हाउ टू डेवलप द एप्लीकेशन विदाउट राइटिंग अ कोड, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। यू आर एबल टू डेवलप द एप्लीकेशन। कैसे? तो वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी किसी एग्जाम्पल की जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कुछ डेवलप कर रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल की। तो अब फिर से सबसे पहला टीम कौन है यहाँ पे? Who's the first team? The first team is the team of Salesforce administrator. Salesforce administrator, Salesforce administrator. पहला team. The first team is the team of Salesforce administrator. What is the responsibility? The responsibility is to develop the front end. Again, अभी तक मुझे सेम लग रहा है। इसके पहले जो कहानी सुनाया ना आपको, अभी वैसी कहानी फिर से सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव। तो अभी तक तो जो मैंने कहा वो सेम लग रहा है मुझे, कि we require front end engineers. We require the Salesforce administrators. Why we require them? So to develop this front end, to develop this front end. एक मिनट। So we require front end engineers, the Salesforce administrator. What is the responsibility of them? Responsibility is to develop the front end, to develop the user interfaces. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या? भाई, फ्रंट एंड बना है तो बैक एंड भी बनना पड़ेगा, बैक एंड भी बनना पड़ेगा। बैक एंड कहाँ बनेगा? डेटाबेस में बनेगा, ठीक है, टेबल्स बनेंगे।
तो क्या वो हमें बनाने पड़ेंगे? भाई डॉट नेट में तो ऐसा होता था कि इसके लिए एक टीम हुआ करती थी, जावा में ऐसा होता था कि इसके लिए ओरेकल की टीम होती थी, और फिर उसके बाद में बिजनेस लॉजिक क्लास के लिए एक टीम होती थी, 3 टीमें होती थी। तो ये था कोई दूसरी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अब सेल्सफोर्स में कैसा होता है? सेल्सफोर्स में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आने वाले 40-45 दिन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज टू डेवलप द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलप करना, ये आप सीखोगे। बस यही डेवलप करना, बस यही। तो सिर्फ यही डेवलप करने का मतलब क्या होता है? नाउ लेट मी टेल यू दिस। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियली इंपॉर्टेंट. What is the beauty of Salesforce? How Salesforce comes into the rapid development part? कैसे? Because see, now see and listen this very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. You only develop as a Salesforce administrator. You only develop the front end. You are only responsible to develop this front end. You are only responsible as a Salesforce administrator. What is your job? Your job is to make the user interfaces. That's it. Your job is to make the. Today I'm not having my mouse, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ. माउस नहीं है मेरे पास में. एनीवेज, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाने की. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो as an Salesforce administrator, what is your job? Your job is to make the user interfaces, the front end part. और बाकी का क्या, बाकी का क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? बाकी का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ because see, whenever you create a front end, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, और बिल्कुल कभी नहीं भूलना. अगर भूलने की बीमारी है तो प्लीज राइट डाउन कर लो, लिख लो. अगर आप मेरे जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले लोग हो तो लिख लो, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे कभी नहीं भूलना है. As a Salesforce administrator, our job is to develop the user interface. Our job is to develop the front end part only. And as soon as you develop the front end, as soon as you develop the front end, your backend is created automatically. Your backend is created automatically. We don't require we don't require anyone. We don't require anyone to create these database tables. We don't require to create database tables. These database tables are automatically created inside database.com. Inside the database.com. You know, these database tables are automatically created. And even this business logic class has also automatically written on the backend. You again don't require to write down the business logic class. You don't require to create the database tables. No, everything has been taken care. All these two things, these two things has been taken care by the Salesforce itself. You just concentrate on developing the front end. That's it. What is your duty is to develop this front end part. Say itna hi. I don't have mouse. I don't have mouse. Please try to understand. You just develop this front end. बस इतना ही करना है आपको, केवल इतना करना है. And your entire database table, the whatever the object you created, for example, you have created a hiring manager. This is the object you have created. So for this object, one table is automatically the same name, hiring manager table is automatically created. Where? Inside a database.com. Okay. And one business logic class, one connector class has also already been written. And these two interfaces are now connected. जैसे ही आपने इसको बनाया ना, वैसे ही कनेक्ट हो जाता है. वैसे ही इवन आपने कोई फील्ड भी क्रिएट नहीं किया अभी. यू हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग इनसाइड दिस, कुछ भी नहीं क्रिएट किया. एज सून एज यू क्रिएट अ टेबल, एज सून एज यू क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड द यूजर इंटरफेस, वन इमीडिएटली वन टेबल हैज बीन क्रिएटेड. कब क्रिएट होता है वो भी मैं बताऊंगा. व्हेन वी गो एंड क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी गो एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कब तुम्हारा एक टेबल बनता है database.com में. वो सब बताने वाला हूँ. बस अभी क्या इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड the entire backend part and the entire business logic class that is being taken care by the Salesforce. तो अब आप बोलो कितनी टीम चाहिए आपको? You just require one team of the Salesforce administrator. That's it. If it is a lightweighted application, only one person is sufficient to develop the entire application. He just concentrate on the development of user interface, the entire backend part, whether it's include the database table or writing the business logic class. That entire thing has been taken care by the Salesforce. Now, these two things, your front end and the business logic class, that comes under the force.com platform. And your database part, which you never create, you never create a database. That is something which is automatically created for you from the Salesforce side.
That comes under database.com. See, remember, if someone asks you this question, and they ask this question, please write down this also. Where in the Salesforce data is stored? Or they could ask you this question, कि Salesforce data is stored where? What is the name of that database where the Salesforce data is stored? I mean, they are trying to get you confused. कि आप answer दो Oracle. Sir, I think it's Oracle where the Salesforce data is stored. I think it is some database server like SQL, maybe, where the Salesforce data is stored. No, it is not. Salesforce का data किसी भी third party पे store नहीं होता, याद रखो. Salesforce have their own servers. और ये मैं दिखा चुका हूँ आपको. Salesforce have their own server in the 3 different regions. Can anybody tell me what are the name of those regions? Yes, can anybody tell me what are the name of those regions? Salesforce के सर्वर दुनिया में 3 अलग-अलग regions में store होते हैं. Can anybody tell me what are the name of those regions? Yes, Shweta. Hello. Hello, sir. Good evening, sir. This is NA, North America region, and the second is EMEA, Europe region, and the last is AP, Asia Pacific region. Yeah, there are 3. Excellent. First of all, excellent. So there are 3 different regions. NA stands for North America. EMEA stands for Europe, Middle East, and Africa. That's a single region. And then the Asia Pacific regions. So Salesforce have their own servers, first of all, and Salesforce store its data into its server. Salesforce का data कभी भी किसी third party के पास नहीं जाता, याद रखिए. So whenever someone asks you, and they try to confuse you with this, where the Salesforce data is stored, you need to answer that Salesforce data is stored inside a database.com. What is database.com? Database.com is the name of Salesforce servers. So whatever the data, whatever the data we create inside the Salesforce is always going to store inside the database.com. That is what. ठीक है? तो ये है, whenever we develop an application, it involves 2 things, force.com and the database.com. Your entire front-end part has been carried out by the force. Your entire back-end part goes with the database.com. Now, database.com is having 2 international certifications, just to understand how much secure your data is. Just to, if these are the banking customers, अगर banking customer के पास आप जाओ, and if you ask them कि मैं आपका data store करता हूँ, let me develop something for you, तो बोलेगा कि हमारा banking का data is very crucial data. What is the guarantee कि हमारा data secure है? तब तो आप उसको बताओ कि we have 2 international certifications in the Salesforce related to the information security and the confidentiality of your information. What is those? That is ISO 27001 compliance, and then the SAS 70 type 2 compliance. So what are these? These are the 2 names of the international certifications. अब आपको भले इसका नाम, इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, लेकिन जो बैंकिंग वाले हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, हाउ डिफिकल्ट इज टू ऑब्टेन दीज सर्टिफिकेशंस. ये मजाक नहीं है बॉस, ये मजाक नहीं है. एक ISI मार्क पर ही हम लोग इतना बिलीव करते हैं इंडिया में, है ना. तो ये वो सर्टिफिकेशन है जिसको जो बैंकिंग सेक्टर में वो जानता है कि हाउ डज what is the importance of SAS 70 type 2, what is the importance of this is something like a Nobel Prize जैसे सर्टिफिकेशन है ये, और जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है उसका मतलब उसके पास डेटा हाईली सिक्योर्ड है, highly secured है. Now Salesforce again offer you the disaster recovery centers. If something happens to your data, so Salesforce provide you the recoveries within fractions of seconds. You get the recoveries, so your business is not going to harm anyway. Your business is not going to harm. Okay, and this this recoveries are real time. This discovery, there are 2 types of recovery techniques. Actually scheduled और the real time. 2 तरह की techniques होती हैं. मैं अभी डिटेल में कभी और एक्सप्लेन करूंगा. Salesforce follow the real time. Whenever you enter something, जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हो ना, तो वो 3 जगह पे स्टोर होता है Salesforce में. ये याद रखो कि एक होता है आपका सर्वर मेन, उसके अलावा 3 और सर्वर, टोटल 4 जगह पे स्टोर होता है. 4 अलग अलग जगहों पे आपका डेटा स्टोर होता है Salesforce में रियल टाइम में. आपको एक ही जगह का पता चलता है, 3 अलग अलग जगह और रहती है जहाँ जो जिसके बारे में हमको नहीं पता रहता है, वो Salesforce की डेटाबेस रिपोजिटरी में रहता है. ठीक है. Whenever your data lost from one place, so it can be recovered from the second. Whenever it is lost from the 2 places, it can be recovered from the third. Whenever it is lost from the third 3 places, it can be recovered from the fourth. और चारों जगह से लॉस्ट हो गया, इसका मतलब पूरी दुनिया ही तबाह हो गई. ठीक है. अब जब पूरी दुनिया ही तबाह हो गई है तो रिकवर करके मतलब क्या है, उसमें हम भी जा चुके हैं. तो इतना सिक्योर है बॉस. तो ये समझ लो कि रियल टाइम में बैकअप्स रहते हैं Salesforce में. जैसे ही आप कुछ स्टोर करते हो, इमीडिएटली 4 जगह पे जाके स्टोर होता है ना. यहाँ पे शेड्यूल्ड इंटरवल्स नहीं होते. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट विद द जिक्सॉ एप्लीकेशन. सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू ऐप क्लाउड.
ऐप एक्सचेंज एक और चीज बता देता हूँ कि एक और तरीका होता है एप्लीकेशन डेवलप करने का। एक तरीका होता है कि आप यू कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम द स्क्रैच, आई मीन जीरो से स्टार्ट करना रिक्वायरमेंट को समझ के। दूसरा होता है ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज इज एज गुड एज योर गूगल प्ले स्टोर। जैसे हम कोई एंड्रॉइड में अगर कोई हम एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वी यूजुअली गो टू द गूगल प्ले स्टोर, है ना। तो ये हमारा सेल्सफोर्स का अपना गूगल प्ले स्टोर है। अगर अगर हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होता है ना, तो देखो हम एज एन, और ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है, वी यूजुअली गो टू ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज इज एक्चुअली वन कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे आपके मेरे जैसे काफी सारे डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, एडमिनिस्ट्रेटर अपना किया हुआ काम, अपना डेवलप किए गए एप्लीकेशंस भी यहाँ पे पोस्ट करते हैं। एंड यू कैन फाइंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज, देयर आर द कैटेगरीज। आपको ऐसा उधर भी मिलता है। If you want to have something related to IT marketing integration whatever, if I am, मान के चलो कि मैं एचआर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाला हूँ, अभी आप लोग भी एचआर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं मेरे साथ, तो वी आर डेवलपिंग समथिंग फॉर द एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक तो ये होता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, है ना। या फिर मैं जाता हूँ ऐप एक्सचेंज पे, आई कैन सी देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, सम ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर पेड, इफ यू वांट टू जस्ट गेट द लिस्ट ऑफ ऑल फ्री एप्लीकेशन, तो फ्री को क्लिक करो, बाकी दोनों को अनचेक कर दो, डिस्काउंटेड एंड नॉन प्रॉफिट्स ऐसे भी होते हैं, है ना। और फिर कौन कौन से एडिशंस में चलना चाहिए वो सब चीजें हैं। तो जैसे आपने देखा होगा आपके प्ले स्टोर पे भी तो यही होता है, कुछ एप्लीकेशन फ्री होते हैं, कुछ एप्लीकेशन पेड होते हैं। यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन है, रिक्रूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ लेके आता हूँ तो इसकी इसकी सारी डिटेल्स खुल जाती है। कुछ बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि रिक्रूटिंग फॉर ऐप एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, इसलिए फ्री है क्योंकि बेसिक फॉर ट्रैकिंग ओपन जॉब्स एंड द कैंडिडेट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस, प्रेफरेंसेस, और ऐसा ही कुछ हम भी बनाने वाले हैं, एंड द कमेंट्स फॉर इंटरव्यूअर्स, तो ऐसा कुछ हम भी बनाने वाले हैं। तो जो एप्लीकेशन आप डेवलप करने वाले हो ना, वो इस काइंड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, और उसके बाद आप इसको अपनी तरफ से यहाँ ऐप एक्सचेंज पे डाल सकते हो। तो एक तरीका ये भी होता है यार, कि हम लोग क्या करते हैं कि वी गो टू द ऐप एक्सचेंज, अगर वो फ्री है तो उसको डाउनलोड करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं, और अगर हमारी एप्लीकेशन से मैच करता हुआ है 30% 40%, तो यहाँ से ले लेते हैं, उतना समय और बच जाता है। वैसे भी सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट बहुत फास्ट है ना, स्टिल वी ट्राई टू सेव द टाइम, और इट इज रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये सारे टेस्टेड रहते हैं। फिर कुछ पेड होते हैं, अगर कोई पेड है और लेकिन ऐसे $12 देने पड़ेंगे, लेकिन मान के चलो कि मैंने इसको चेक किया और मेरे एंटायर डेवलपमेंट का 60% यहाँ से मिल रहा है, सो आई विल राइट वन मैसेज एंड आई विल राइट वन ईमेल टू माय टीएल कि यार मैंने क्या एप्लीकेशन देखा है टीएल, आई हैव सीन वन एप्लीकेशन कॉल्ड एज इम्पैक्ट लर्न ऐप एक्सचेंज पे, ऑल्दो इट्स $12, बट द फंक्शनैलिटी इज ऑलमोस्ट 60% मैचिंग हो रही है हमारे से, व्हाई डोंट वी बाय दिस, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो दे फिर उसके बाद में क्या होता है कि दे वी यूज टू कांटेक्ट दिस, अभी इसको कांटेक्ट कर सकते हैं अपन, मोर पे जाएंगे ना तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल मिल जाती है। फिर उसके बाद में फिर कैसे कांटेक्ट करना, वो सारी चीजें मिल जाती है, कौन सा ग्रुप है, किसने बनाया है, उसको मेल करो, आप उसके थ्रू बात करो और उसको पेमेंट करो, दैट्स इट, यू गेट द प्रोडक्ट, हो जाता है, मिल जाता है आपको। इस तरह से ये सब चलता है। तो ऐप एक्सचेंज एक और तरीका है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को फास्ट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक्सॉस पे जाते हैं। व्हाट इज जिक्सॉ? So Jigsaw is also known as data.com. इसका ज्यादा नाम तो data.com है, बट प्रीवियसली इट वाज Jigsaw। तो Jigsaw क्या था? Jigsaw एक एप्लीकेशन हुआ करता था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्सफोर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया, जैसे सेल्सफोर्स ने एग्जैक्ट टारगेट को टेक ओवर किया, है ना। और आपको मैंने पढ़ा है कि हाउ डज द मार्केटिंग क्लाउड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। मार्केटिंग क्लाउड को सेल्सफोर्स ने स्क्रैच से नहीं बनाया है, सेल्सफोर्स ने परचेस किया एक एप्लीकेशन को, समथिंग कॉल्ड एज एग्जैक्ट टारगेट, और एग्जैक्ट टारगेट को फिर रीफॉर्म किया, इसको ऑन प्रेमाइस से ऑन क्लाउड पे लेके आया, एंड देन एडेड फ्यू मोर फंक्शनैलिटीज, एंड देन इट हैज क्रिएटेड द मार्केटिंग क्लाउड। इन द सेम वे देयर वाज वन एप्लीकेशन कॉल्ड एज जिक्सॉ एप्लीकेशन। तो जिक्सॉ एप्लीकेशन क्या किया करता था, यूएस का है ये। जिक्सॉ एप्लीकेशन what it does is that it used to try to get the information, it used to collect the informations, I mean the informations related to the people, the informations related to the organization, it used to get the informations regarding this, कि अगर जैसे पीपल इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं यूएस के लिए, तो पीपल इंफॉर्मेशन में द इंफॉर्मेशन लाइक जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है उनका, जैसे हमारे आधार कार्ड, देन द पर्सन रिलेटेड टू पर्सन जो है वो कौन सी कंपनी में काम करता है, और उसके उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके बाद में उसका एनुअल सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या है, उस पर कुछ लोन्स वगैरह है क्या। अब ये सब इंफॉर्मेशन किसको बेची जा सकती है,
ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, जो इंटरेस्टेड है पीपल इन्फॉर्मेशन को। आज भी क्या हो रहा है, आप क्यों फेसबुक पर लोगों ने इतने एलिगेशंस लगाए कि यू यू शेयर अवर डेटा, यू शेयर अवर पर्सनल डेटा। अभी मेरी सबको सलाह है, कोई भी नेटवर्किंग वेबसाइट हो, कोई भी सोशल सिक्योरिटी वेबसाइट हो, अपना पर्सनल डेटा डालो ही मत। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा डेटा कौन किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, वी यूजुअली हम अपने आप को सोशल फिगर्स बनाने के चक्कर में इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं जो हमें नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक इन्फॉर्मेशन को बेच सकते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ जिक्सॉ भी था। जिक्सॉ क्या किया करता था कि इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है हमारी एरिया में, एक सिंपल कॉफी शॉप ही खुली है, ठीक है, तो फिर उसमें उसका क्या है, मतलब उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर कोई एक इंटरनेट कैफे खुला है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका डेटा क्या है, उसके पास कौन कौन से क्लाइंट्स है, व्हाट आर द न्यू प्रोजेक्ट्स दे आर एक्सपेक्टिंग, है ना, तो वो प्रोजेक्ट में क्या क्या लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका अभी अभी कोई जिसको नया क्लाइंट मिला है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर फर्म है जिसको नया क्लाइंट मिला है, और जिक्सॉ को उसके बारे में पता है कि दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज गेट दिस, उसको ये पीएसओ मिल चुका है, एंड देन ही माइट रिक्वायर टू उसका रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है फॉर दिस प्रोजेक्ट, ही इज रिक्रूटिंग हंड्रेड्स ऑफ द इंजीनियर, फॉर देम ही मस्ट रिक्वायर द लैपटॉप्स। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन वो किसी ऐसी कंपनी को दे दे, जैसे कि डेल को दे दे कि यार देयर इज अ वन कंपनी who's actually recently got this order and he is in need of, maybe he is in need of this 100 of 200 of laptops, why didn't you contact to him, why don't you quote something to them, maybe you could get the orders of the laptop। तो इधर मार्केटिंग की बात हो रही है, इधर बात हो रही है कि लोगों की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करने की। तो यूएस में ये बड़ा कॉमन है, अपने को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट यूएस में ना ये चीजें बड़ी कॉमन है, ठीक है, कि टू गेट दिस क्वालिटी लीड, to get this quality lead, we usually in the US, people used to buy the information, people used to buy, because वहाँ डिजिटाइजेशन बहुत पहले हो चुका है एक्चुअली, हमारे यहाँ तो बहुत बाद में आया आधार कार्ड का नंबर, बहुत बाद में जाके इंडिया को रियलाइज हुआ कि हर एक बंदे का एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ तो अभी तो इतना एडवांस हो चुका है कि अभी आई मीन अभी यूएस का मुझे नहीं पता कि, बट मुझे जापान का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अभी तो एक चिप है, लोगों के अंदर चिप इंसर्ट कर दी जा रही है, सम सॉर्ट ऑफ बायोमेट्रिक, कि आप चाहे कहीं पर भी हो यू आर ट्रेसेबल। उसके काफी सारे फायदे हैं, उसके साथ काफी सारे फायदे हैं, तो फिर उसके नुकसान भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल कुछ नुकसान हो उसका, बट एटलीस्ट फायदा ये कि जैसे घरों में लोगों के बच्चे गुम जाते हैं, शायद ऐसा कुछ भी ना हो किसी के साथ, बिकॉज वो 24/7 सैटेलाइट से ट्रैक हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं उसकी, आपकी बायोमेट्रिक से बहुत कुछ पता चल जाता है। सो ऐसा और ऐसा काफी सारी ये चीजें एडवांस होती चली जा रही है। देखिए हम क्योंकि इंडिया में, शायद इसलिए हमको ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता होगा, बट यूएस में चीजें बड़ी कॉमन रहती है। So there was a company, there was an application called a Jigsaw application. कंपनी का नाम जिक्सा था, and the name of application was Jigsaw application. They were used to conduct some surveys with the help of some sort of agents. They were hiring some agents. Now there were so many kinds of different kinds of survey के अलग-अलग तरीके हुआ करते थे, and they basically try to get these two information, people information and the organization information. अब ये information कहाँ दी जाती थी? Marketing के लिए precisely. It was a very popular application. Salesforce came to know this. Salesforce को पता चला कि ऐसा कुछ बड़ा चल रहा है, तगड़ा चल रहा है कुछ तो Salesforce की अपनी कुछ टेंडेंसी है, अगर कुछ नया है, अगर कुछ अच्छा है, और अगर लोगों को इसकी जरूरत है, और इम्पोर्टेंटली अगर वो ऑन प्रीमाइस है, तो चलो उसको खरीद लेते हैं और उसको ऑन क्लाउड कन्वर्ट कर देते हैं। तो Salesforce has purchased this application Jigsaw, and rename is first of all converted it from the on premise to on cloud and rename it to the data.com. तो data.com ये एक एप्लीकेशन है Salesforce का, this one is one cloud application, it's a cloud service where you can get the people related information, you can even get this organizational related information, but you need to sign few of the licenses, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है तो आपको कुछ SLA साइन करने पड़ेंगे कि what kind of application, why you are requiring, why you are going to require all this information। तो ये थोड़ा सा आपको जिक्सॉ से पता चलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन क्लाउड, कोलैबोरेशन क्लाउड, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। कोलैबोरेशन क्लाउड, एंड दिस इज द प्रोबेबली लास्ट क्लाउड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसके बाद जो चीजें हैं वो एज एन असाइनमेंट आपको देने वाला हूं मैं। आई हैव गिवन यू वन असाइनमेंट रिलेटेड टू ओमनी चैनल, आई एंड आई कैन ओनली एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है।
Yes, collaboration cloud. So collaboration cloud actually, it consists of वैसे तो so many things, but इसका जो सबसे important feature मुझे आपको explain करना है वो है chatter. ठीक है, collaboration cloud, लेकिन इसको ज्यादातर जो बोला जाता है वो chatter बोला जाता है. Chatter is one feature that you get from the collaboration cloud. Let me try to show you that. Let me try to go the home page. Here is one area. Here is one area. This particular area. थोड़ा माउस नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे. With this area, what you can do, you can create one message. You can create one message over here. कैसे? See, if I can write something over here. Hi. एक मिनट थोड़ा सा लैपटॉप होल्ड करने में भी दिक्कत हो रही है. टुडे we are planning to throw a party. इस तरह से कुछ. ठीक है, and let us send. और जब मैं शेयर करता हूँ to throw a party. Okay, throw. Hi, we are planning to throw a party. Let me just share this. When I share this message, inside my organization, जितने भी users होंगे सबको ये message चला जाता है. They get this message. It is as good as like writing the WhatsApp messages, as good as transferring the SMS जो आप ट्रांसफर करते हैं. तो ये एक फीचर है आपके चैटर का. ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, दिस पर्टिकुलर where you can transfer a post, you can transfer a file, you can plan for a event. Even आप एक इवेंट प्लान कर सकते हो. जैसे मैं पार्टी प्लान कर रहा था अभी, and I can log a call, I can call in internal calls जो चलते हैं वो, and I can I can send so many things. I can make up a poll. अगर कोई मैं पोलिंग कर रहा हूँ कि यार पार्टी करनी है लेकिन कहाँ जाना है, चिकलदरा जाना है कि पचमढ़ी जाना है, तो दिस वीकेंड वी आर प्लानिंग फॉर दिस, तो आप पोल इनिशिएट करवा सकते हो कि कितने परसेंट ऑफ लोग ने कहा कि यहाँ जाना है, कितने परसेंट ऑफ लोग ने कहा वहां जाना है. तो दीज आर फ्यू फीचर्स इनसाइड द चैटर्स. नाउ चैटर इज व्हाट? चैटर इज अ फीचर ऑफ कोलैबोरेशन क्लाउड. अब ये क्या सब लिख रखा है मैंने, तो एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मान के चलिए कि इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए यूजुअली हम क्या इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए. लाइक वी यूजुअली यूज दिस लिंक या स्काइप फॉर द बिजनेस जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ. लोटस सेम टाइम, ये आईबीएम का टूल है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जनरली, जैसे मेरा कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चलता है. ठीक है, तो हम लोग जनरली अपने आप से इंटरनल कम्युनिकेशन, जैसे हम एक प्रोजेक्ट में वी आर द 10 मेंबर्स, वी आर वर्किंग इनटू द प्रोजेक्ट ऑफ टीसीएस. ठीक है, वी आर द टीम ऑफ 10 मेंबर्स. आउट ऑफ द 7 आर द डेवलपर्स, जो डेवलपर्स बिलोंग करते हैं हैदराबाद और दिल्ली लोकेशंस पे. ठीक है, वी हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजर हु बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड द डिलीवरी मैनेजर टू. देयर आर 2 डिलीवरी मैनेजर दोज हु आर सिटिंग इन द यूएसए. सो हाउ वी यूजुअली कम्युनिकेट टू विद ईच अदर. तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में? क्या हम आपस में एक दूसरे को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलता. आईटी में यू नेवर गेट द कॉल ऑन योर पर्सनल नंबर पे. आपको कभी भी आईटी में ऐसा नहीं होता है, मतलब नहीं होता है. आप किसी भी और प्रोफेशन में होंगे होता होगा, बट आईटी में ऐसा कभी नहीं होता. nobody ever try to call you on your personal number unless and until you have a friendly relationship. आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप पर आपने अलाउ किया वो अलग बात है, वरना आपकी प्राइवेसी 100% आपकी प्राइवेसी पर ध्यान दिया जाता है. सो आईटी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पर्सनल कॉल्स आते हैं या आपके नंबर पे एसएमएस आता है या व्हाट्सएप आता है. नेवर नेवर. वी ऑलवेज हैव आवर ओन कम्युनिकेशन मैसेंजर. दैट इज यूजुअली आउट ऑफ दिस एनी कुड बी. स्काइप यूज करते हैं लोग आईबीएम के यूज करते हैं. लोटस टाइम ये आईबीएम का एक सॉफ्टवेयर है, या फिर यूजुअली अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल रहा है बहुत ज्यादा. तो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर. अब इनको खरीदने के लिए आपको लाइसेंस का अमाउंट पे करना पड़ेगा, काफी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजुअली इस पे जाएगी. जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल है, स्टार्टअप है, मिड साइज है, वो क्या करेगा? तो दे विल ट्राई टू गो विद सम सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स टूल. मतलब ये अगर वो नहीं खरीद सकते ना, इफ दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस एक्सपेंसिव टूल, व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू गेट लाइक एम या फिर स्काइप नॉर्मल जो फ्री वर्जन आता है, ट्रैक प्लस, ऐसा कुछ तो भी. और दीज आर फ्यू ओपन सोर्स टूल. लेकिन ओपन सोर्स टूल के साथ तो काफी दिक्कतें हैं. ओपन सोर्स टूल जो होता है ना, वो वैसे तो रिकमेंडेड होता ही नहीं है. आईटी में कभी भी ओपन सोर्स टूल नहीं रेकमेंड किए जाते. आपकी जो सीएमएम रेटिंग है वो अफेक्ट होती है इससे, और आपको बिजनेस आपके हाथ से वाइप आउट हो सकता है. अगर क्लाइंट को पता चल गया कि यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स टूल, तो क्लाइंट विड्रॉल कर लेगा प्रोजेक्ट आपसे.
और दैट इज व्हाई वी नेवर रिकमेंड टू यूज द ओपन सोर्स टूल। लेकिन अगर आपके बजट में है ही नहीं तो आप क्या करोगे फिर? टू हैव दिस इंटरनल कम्युनिकेशन यू मस्ट ट्राई टू गो विद दिस, क्योंकि इनमें काफी खतरा रहता है ना, आपके नेटवर्क को हार्म कर सकता है। यू नेवर कम टू नो कि वो बैकएंड में क्या स्क्रिप्ट रन हो रहा है। मतलब मे बी आप कोई टूल यूज कर रहे हो, उसके पीछे में क्या स्क्रिप्ट रन हो रहा है। मतलब ये जो हैकर्स होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो फ्रंट एंड में कुछ और बैक एंड में कुछ और चला देता है। एंड यू कैन नेवर कम टू नो कि ये क्या बैकएंड में क्या स्क्रिप्ट रन हुआ। एनोनिमसली कोई स्क्रिप्ट रन होता है और पूरा डेटा आपका स्टील आउट हो जाता है। तो वी इन द आईटी वी नेवर बिलीव ऑन दिस ओपन सोर्स टूल। हर चीज लाइसेंस कॉपी रहता है, ठीक है, दैट इज वाई। तो अब यहाँ बात चल रही है कि यार देखो, एक तो अगर काफी पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो गो विथ ऑल दिस। अगर पैसा नहीं है तो यू यू हैव दिस ऑप्शन। प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है एंड वी डोंट वांट टू गो विथ दिस ऑप्शन। I mean, I, as a startup company, I don't have that much of investment that I can buy this the license of Microsoft Teams, you know. So, and I even don't want to go with all this. So, what is my option? If I am using a Salesforce application, inside the Salesforce, Salesforce has given me one free tool called as Salesforce Chatter, and this is highly secured. I can do whatever, whatever the things, even the things which are more in the Microsoft Teams. This Salesforce Chatter have more features. If you have used these Teams and you use the Chatter, you come to know that there are more features inside the Chatters. Microsoft Teams has other features and Chatters, and that is what they are free. They are free for you, and they are Salesforce certified tools. So, with the help of Collaboration Cloud, Salesforce provide you one Chatters. Salesforce provide you one communication channel. What you can do, you can post something. You can post you can post the chat feeds, then you can post the files. You can plan for the new events, and you can certainly do lots of the things. You can certainly do lots of the thing with the help of Salesforce Collaboration Cloud, with the help of Salesforce Chatters. So that is what the solution being provided to you from the Salesforce. And one last cloud I would like to discuss in this 5 minutes is this Salesforce Einstein. Recently, 10 years back, a new something comes into the technology called as IoTs, Internet of the Things, something like the artificial intelligence, neural networks. Now, being an electronics engineer, electrical, or maybe the computer, हो सकता है आप लोगों ने टर्म सुनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऐसा और ऐसा बहुत सारी चीजें। IoTs, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, न्यूरल नेटवर्क्स, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी। सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट हर डोमेन में है, ऑलमोस्ट हर डोमेन में है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे सोच सकते हो कि सेल्सफोर्स इस डोमेन में नहीं होगा? हाउ सिंपली हाउ कैन यू जस्ट थिंक कि सेल्सफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पे नहीं होगा, सेल्सफोर्स आईओटीज की प्रोजेक्ट पे नहीं होगा? शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, शायद ही कोई ऐसा डोमेन है जहां पे सेल्सफोर्स नहीं है। ऑलमोस्ट हर डोमेन पे सेल्सफोर्स के पास कस्टमाइज सॉल्यूशंस है। Now, if you want to go in the sector of artificial intelligence, just complete this training and start learning the Salesforce Einstein. What is Einstein? Salesforce Einstein is that branch of the Salesforce, that module of the Salesforce where you get this learning, how to develop the customized Salesforce-based cloud artificial intelligence and the IoTs and the robotics projects. That is the branch of the Salesforce where we actually learn all this artificial intelligence in the IoTs, robotics, nanos, neurals, whatever. And let me tell you one big brand name. Have you ever heard about the Tesla के बारे में नाम सुना है कि Tesla Corporation, Tesla Motors? Have you heard this? किसी ने सुना है क्या नाम? जिसने भी सुना है बताओ क्या सुना है? Who's the CEO of the Tesla? कौन है CEO? अच्छा, anyway, what you have heard, what is the most popular thing that you have heard about the Tesla? Tesla ये कंपनी है, काफी सारी आपकी बैटरी वाली जो कार्स, हाई स्पीड कार्स वगैरह बनाती है। What you have heard about the Tesla? क्या क्या सुना है आपने? बताइए, शेयर करिए।
The CEO of Tesla is Elon Musk, and he's making the electric car in India and all over the world. Exactly. And he's one of the richest man in the world. Yes. Apart from all this, what just Firoz has just told us, Elon Musk is the CEO, and he's the only person. I mean, let me tell you this: ki, apart from the electric cars, say this Tesla is the only company, only private company in the world who is actually working for the space projects. For all these projects, working, just developing a community in the Mars, developing something for the people, that the people from this world that go and live over the Mars, they are developing with a project called as SpaceX. This is the only private company apart from all these government organizations like ISRO, NASA, and the US based or the Russian based astronomical agencies. Tesla is the only and only one and the only private company in this world who is doing something in the astronomical projects और काफी सारा invest कर रहा है. And let me tell you this, Tesla is one of the client of Salesforce. With the help of Salesforce, Einstein, they are developing so many things. So now you can understand how big is the Salesforce and how much vast is the Salesforce. It's a matter of the thing that you are going to, I mean, you are learning this training as a beginning part. Everyone has to go with this training. उसके बाद में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है. So let me stop here with this. Just a second, I'm almost about to stop, Firoz. Yeah. Now Yes, you need to go with this. I'm giving you as an homework because it's entirely not possible for me to to cover all these clouds. You need to go with this. Salesforce has recently come up with all these clouds. Recently, in the past 3 years, Salesforce has added few more clouds: education cloud, health cloud, community cloud, and NPSP. NPSP stands for non-profit service pack. Non-profit service pack. I'm giving you this as an assignment. Google all these words, Google all of them, and then try to get the informations related to the Salesforce Education Cloud, Health Cloud, Community Cloud, and NPSP Cloud. So do with this. This one is an assignment for you. So this was all in the demo lectures. अब इसके बाद में from tomorrow, कल से आपका start हो जाएगा actual training. Let me first stop the training and then let's discuss. 7:30 I'm having one client call. Up to 7:20 I'm going to take your questions, or maybe 25. उसके ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा मैं. Let me first stop the recording.